क्वेश्चन नंबर 472 देख रहे हैं हम लोग पीजी। क्वेश्चन नंबर 472 क्या पूछ रहे हैं? फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स क्या क्या होती है? ऑप्शन 1 इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ऑप्शन 2 कैरीज प्रोटीन, कैरीज प्रोटीन। ऑप्शन 3 इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ऑप्शन 4 फैट एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन 5 प्रिवेंटिव रोल इन इन्फेक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन। फिर से देखिए, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक इंक्रीजेज ऑनकोटिक प्रेशर, कैरीज प्रोटीन, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, फैट एब्जॉर्प्शन या प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंड द राइट आंसर इज बी डी एंड ई, बी डी एंड ई। ठीक है ना, कैरीज प्रोटीन, फैट एब्जॉर्प्शन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 473 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 473 पूछ रहे हैं स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन लीड्स टू। स्टिम्युलेशन of post ganglionic sympathetic neuron leads to. Option 1 fast EPSP, option 2 slow EPSP, option 3 fast IPSP, option 4 slow IPSP, option 5 very slow EPSP, फिर से देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन लीड्स टू फास्ट EPSP, स्लो EPSP, फास्ट IPSP, स्लो IPSP या वेरी स्लो EPSP। एंड द राइट आंसर इज A, B and D. Fast EPSP, slow EPSP and slow IPSP. Fast EPSP, slow EPSP and slow IPSP and एक मिनट, डी में स्लो IPSP। क्वेश्चन नंबर 474 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 474 हीम सिंथेसिस रिक्वायर। ऑप्शन 1 फेरस आयन, ऑप्शन 1 फेरस आयरन, ऑप्शन 2 ग्लाइसिन, ऑप्शन 2 ग्लाइसिन, ऑप्शन 3 एलानिन, ऑप्शन 3 एलानिन, ऑप्शन 4 सक्सिनाइल कोलिन, ऑप्शन 4 सक्सिनाइल कोलिन, एक मिनट, सक्सिनाइल कोए या ऑप्शन 5 लेड। हीम सिंथेसिस रिक्वायर आयरन, ग्लाइसिन, एलानिन, सक्सिनाइल कोए या फिर लेड। एंड द राइट आंसर इज A, B and D अगेन, आयरन, ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए। क्वेश्चन नंबर 475 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 475 पूछ रहे हैं ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या होती है? ऑप्शन 1 साइट फॉर ATP सिंथेसिस, ऑप्शन 2 आइसोलेशन इज डन बाय हाइड्रोलिसिस इन अल्कलाइन pH, isolated by hydrolysis in alkaline pH, option 3 protein synthesis या ऑप्शन 4 फैटी एसिड सिंथेसिस। फिर से देखिए, ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया साइट फॉर ATP सिंथेसिस, आइसोलेटेड बाय हाइड्रोलिसिस इन अल्कलाइन pH, प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस। द राइट आंसर इज A and C. That is site for ATP synthesis and protein synthesis. Mitochondria is site for ATP synthesis and protein synthesis. क्वेश्चन नंबर 476 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 476 का पूछ रहा है ब्लड सप्लाई ऑफ लिटिल्स एरिया आर। ब्लड सप्लाई ऑफ लिटिल्स एरिया क्या होती है? ऑप्शन 1 ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पैलाटाइन
palatine artery. Option 2, septal branch of superior labial artery. Septal branch of superior labial artery. Option 3, anterior ethmoidal artery. Anterior ethmoidal artery. Option 4, septal branch of sphenopalatine artery. Septal branch of sphenopalatine artery. Option 5, nasal branch of sphenopalatine artery. Nasal branch of sphenopalatine artery. Blood supply of little area is greater palatine artery, septal branch of superior labial artery, anterior ethmoidal artery, septal branch of sphenopalatine artery, या nasal branch of sphenopalatine artery. The right answer is A, B, C and D. A, B, C and D. That is greater palatine artery, septal branch of superior labial artery, anterior ethmoidal artery and septal branch of sphenopalatine artery. क्वेश्चन नंबर 476 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 476 क्या पूछ रहे हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल डेवलप फ्रॉम. प्राइमोर्डियल germ cell develop from option 1, neural crest. Option 2, splanchnic mesoderm. Option 3, genital ridge. Option 4, yolk sac. Option 5, somatic mesoderm. फिर से देखिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल डेवलप फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट, splanchnic mesoderm, genital ridge, yolk sac या somatic mesoderm. And the right answer is yolk sac. Primordial germ cell develop from yolk sac. क्वेश्चन नंबर 477 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 477, एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिफिकेशन सेंटर्स आर सीन. तो ऑसिफिकेशन सेंटर सीन एट बर्थ. ऑसिफिकेशन सेंटर सीन एट बर्थ. ऑप्शन 1, लोअर एंड ऑफ फेमर. ऑप्शन 1, लोअर एंड ऑफ फेमर. Option 2, upper end of humerus. Option 3, calcaneum. Option 4, upper end of tibia. Option 5, head of humerus. Ossification center seen at birth. Lower end of femur, upper end of humerus, calcaneum, upper end of tibia, head of humerus. And the right answer is A and B. It is lower end of femur and upper end of humerus. Question of 478 देखेंगे. Question of 478. Median nerve injury at elbow affect. Median nerve injury at elbow affects. Option 1, adduction of thumb. Option 4, flexion at distal interphalangeal joint of second finger. Flexion at second DIP. Option 3, flexion of PIP of third finger. Flexion at third PIP. Fourth, flexion at first and second distal DIP finger. Flexion at first and second DIP. Option 5, flexion of metacarpophalangeal joint except thumb. Flexion of MCP except thumb. फिर से देखिए, मीडियन नर्व इंजुरी एट एल्बो अफेक्ट्स एडक्शन ऑफ थंब, फ्लेक्शन एट सेकंड डीआईपी, फ्लेक्शन एट थर्ड पीआईपी, फ्लेक्शन एट फर्स्ट एंड सेकंड डीआईपी या फ्लेक्शन ऑफ एमसीपी एक्सेप्ट द थंब. एंड द राइट आंसर इज ए, बी, सी एंड डी.
The right answer is A, B, C and D. A, B, C and D. That is adduction of thumb, flexion at second DIP, flexion at third PIP, flexion at first and second DIP. Question number 479 देख रहे हैं. Question number 479, blood supply of great toe are. Blood supply of great toe. Option 1, dorsalis pedis artery. Dorsalis pedis artery. Option 2, lateral plantar artery. Lateral plantar artery. Option 3, metacarpal artery. Metacarpal artery. Option 4, posterior tibial artery. Posterior tibial artery. Option 5, medial plantar artery. Medial plantar artery. फिर से देखिए, blood supply of great toe are dorsalis pedis artery, lateral plantar artery, metacarpal artery, posterior tibial artery, medial plantar artery. And the right answer is A and E. A and E. That is dorsalis pedis artery and medial plantar artery. Question of 480 देखेंगे. Question of 480. True statement about esophageal hiatus. True about esophageal hiatus. क्या क्या है? Option 1, lies between two crura of diaphragm. Between two crura of diaphragm. Option 2, at the level of D2 vertebra. At D2 vertebra. Option 3, vagus nerve passes through it. Vagus nerve passes through it. Option 4, lie in right crura of diaphragm. Lie in right crura of diaphragm. Option 5, thoracic duct passes through it. Thoracic duct passes through it. Passes through it. This is true about esophageal hiatus. Between two crura of diaphragm at D2 vertebra, vagus nerve passes through it. Lie at right crura of diaphragm, at thoracic duct passes through it. The right answer is C and D. The right answer is C and D. Vagus nerve passes through it and it lies in the right crura. Right crura and the vagus nerve passes through it. Question number 481 देखेंगे. Blood supply of lungs are. Blood supply of lungs. Option 1, pulmonary artery. Option 1, pulmonary artery. Option 2, pulmonary vein. Pulmonary vein. Option 3, bronchial artery. Bronchial artery. Option 4, intercostal artery. Intercostal artery. Option 5, internal thoracic artery. Internal thoracic artery. The right answer is A, B and C. Pulmonary artery, pulmonary vein, bronchial artery. Question of 482 देखेंगे. Question of 482, recurrent laryngeal nerve has following course in neck. Recurrent laryngeal nerve course in neck. In neck. Option 1, anterior to inferior thyroid artery. Anterior to inferior thyroid artery. Option 2, through sternocleidomastoid. Through sternocleidomastoid. Option 3, passes between bronchs of inferior thyroid vessel. Between inferior thyroid artery and vein. Option 4, it passes posterior to inferior thyroid vessel. Posterior to inferior thyroid vessels. Option 5, superficial to inferior constrictor. Superficial to inferior constrictor. And the right answer is A, C and D. A, C and D. Anterior to ITA, between internal thyroid artery and vein, and posterior to internal thyroid veins. Question 483 देखेंगे. Question 483, which of the following are draining channels of cavernous sinus? Cavernous sinus drains to. Drains to. Option 1, inferior petrosal sinus. Inferior petrosal sinus. Option 2, inferior ophthalmic vein. Inferior ophthalmic vein. Option 3, sphenoparietal sinus. Sphenoparietal sinus. Option 4, middle cerebral vein. Middle cerebral vein. Number 5, superior ophthalmic vein.
superior ophthalmic vein. The right answer is A and E. Inferior petrosal sinus and superior ophthalmic vein. Cavernous sinus drains into inferior petrosal sinus and superior ophthalmic vein. आज के लिए इतना ही. Thank you.